Hi everyone, I am Nandita, your verbal ability and soft skills trainer. And today I have got a new lesson for you. Now, before we begin with the lesson, एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे एंड आपके साथ शायद ये हुआ भी हो कि आप कहीं पर गए हो, ठीक है, और आपने देखा हो किसी को एंड यू वर लाइक ओ वाओ व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी, या फिर आपने कभी किसी से बात करी हो और आपको लगा हो ओ माय गॉड व्हाट अ वियर्ड पर्सन ही इज और शी इज। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? वेल well, कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा जरूर होता है दैट वी गेट सो वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी, और या फिर कुछ कभी ऐसा होता है कि वी गेट सो मच अनॉयड विद समबडी, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। वेल, आई बिलीव हम में से कोई भी कभी भी नहीं चाहता है कि हम दूसरों को पसंद ना आए, राइट? Whether we accept it or we do not accept it, we all want to be liked by others. Yes, and this is a human nature. And agar aisa hai, it is really good. So in today's lesson, I will be sharing 5 magical tips with you people, जिससे कि आपको ये पता लगेगा that what are those 5 things through which you can easily attract somebody, or through which you can easily be liked by somebody. All right, and I'm pretty sure you are very much interested to know that what those things are. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 5, सो आपको मैं 5 चीजें बताऊंगी, आपको उन 5 चीजों पर काम करना पड़ेगा एंड देन यस you will be all ready to impress somebody. Okay, so the number one tip that I have for you is set an intention. आप कभी भी किसी से मिल रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू सेट एन इंटेंशन कि आप उससे क्यों मिल रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मीटिंग दैट पर्सन। ठीक है, सो व्हेन यू आर सेटिंग द इंटेंशन, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिससे भी मिल रहे हो, आर यू मीटिंग दैट पर्सन फॉर अ बिजनेस मीट, फॉर अ फॉर्मल मीट, या फिर यू आर मीटिंग दैट पर्सन फॉर एन इनफॉर्मल मीट, और यू आर मीटिंग दैट पर्सन कैजुअली। सो आपको ये इंटेंशन अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना है। अगर आप किसी को फॉर्मली मिल रहे हो, अगर आप किसी को किसी बिजनेस मीट के लिए मिल रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन दैट मैनर। ठीक है, और अगर आप किसी को कैजुअली मिल रहे हो, अगर आप यू आर सपोज आपके किसी फ्रेंड ने कहा टुडे आई विल मेक यू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, सो यू नो दैट इज अ कैजुअल मीट। सो ऑफ कोर्स आपको वो दिमाग में रखना है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू आर गोइंग टू इनिशिएट विद दैट पर्सन। दैट मैटर्स अ लॉट। कई बार क्या होता है, हम बिजनेस मीट के लिए बहुत प्रिपेयर होते हैं, और जब हम किसी से कैजुअली मिलते हैं तो भी हम उससे वैसे ही ऑफिशियल मैनर में बात करने लगते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि if you are meeting somebody, are you meeting that person for an official purpose, for a business purpose, या फिर अगर आप किसी से मिल रहे हो तो वो क्या कैजुअल पर्पस है, क्या है? इसका डिफरेंस आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद की आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो टोन है, वो उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप किसी से बिजनेस मीट से मिल रहे हो, सो दैट पर्सन इज एक्चुअली interested to see that side of yours. That person is actually willing to see how professional you are, which means that you have to showcase your professional side. अगर आप किसी से ऐसे कैजुअली मिल रहे हो और उसके आगे आप अपने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में बिहेव कर रहे हो, बहुत ही ऑफिशियल वे में बिहेव कर रहे हो, सो इवन वहां पर वो चीज भी नहीं अच्छी लगेगी, राइट? So we need to make sure that we are in which situation. According to that, we need to present ourselves. So सबसे पहला पॉइंट है सेट एन इंटेंशन कि आप किससे मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर दैट, राइट? कि आप वहां पर फ्रेंड बनाने जा रहे हो, वहां पर आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करने जा रहे हो, या फिर दैट इज अ सिंपल मीट। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट? नेक्स्ट, सेकेंड, प्रेजेंट योर सेल्फ अप्रोप्रिएटली। आपने एक कोट सुनी होगी दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? सो ये कोट बहुत फेमस है, एवरीबडी नोज दिस कोट, और ये कोट बहुत ही सही है। ठीक है, हम अपना पहला इंप्रेशन जिसको देते हैं, दैट बिकम्स द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अभी इंप्रेशन में दैट पर्सन इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट अस,
उसे नहीं पता है हाउ गुड आई एम, उसे नहीं पता है हाउ काइंड आई एम, उसे नहीं पता है हाउ हम्बल आई एम. All that person can see is my physical appearance. So we need to make sure that we present ourselves at the best. जो भी बेस्ट हो सके उस वे में हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है. Again, you need to decide one thing. What you need to decide, that if you are presenting yourself, then that presentation matters a lot. You are going for a formal meet, you are going for an official meet, या फिर you are going for a casual meet. तो अगर आप किसी formal meet के लिए जा रहे हैं, then you need to dress accordingly. And अगर आप किसी informal meet के लिए जा रहे हैं, then again you need to dress accordingly. ठीक है. अब for example, आप किसी शादी में गए हैं, राइट? आप किसी शादी में गए हैं, आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म या कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप अपने कॉलेज में हैं, राइट, तो आप वो ड्रेस नहीं पहनेंगे जो कि आपने किसी की शादी में पहनी होगी. सो दैट मेक्स एन एंटायर डिफरेंस. So you need to know that what is the occasion where you are going and how you are supposed to dress yourself. That matters a lot. Another thing is that how you are carrying yourself. आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो उसमें आर यू कंफर्टेबल और नॉट, दैट मैटर्स अ लॉट. अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, देन अगेन सारी चीजें बेकार हो जाती हैं. आपने बहुत अच्छा लगने के लिए यू वोर समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू कैरी दैट. आपको देखकर दूसरों को लग रहा है यस दैट पर्सन इज अनकंफर्टेबल, which is again you have not justified the situation. So you have to wear something in which you are comfortable, plus that goes well with the situation. What kind of person you are. कई बारी होता है when you dress appropriately, you actually uh, project that what kind of person you are. आपकी personality के बारे में पता चलता है, whether you take care of yourself or not. एक बहुत ही अच्छा quote है, dress the way you want to be addressed. आपको आपका जो मन है कि आपको लोग इस तरह से ड्रेस करें, विच मीन्स यू नीड टू ड्रेस योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. अगर आप एक जेंटलमैन की तरह ड्रेस अप करेंगे तो जो लोग होंगे आपको उसी की तरह ट्रीट करेंगे. अगर आपने बहुत ही कैजुअल वो कुछ पहना हुआ है या फिर ऐसे आप लोअर टी शर्ट में आ गए, देन पीपल आर गोइंग टू ट्रीट यू लाइक दैट. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू ड्रेस योर सेल्फ इन द वे यू वॉन्ट टू बी एड्रेस्ड बाय पीपल. अगैन ड्रेस योर सेल्फ एज पर द ओकेजन. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि भाई जैसा ओकेजन है हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप करना है. ठीक है. आपकी बर्थडे पार्टी है तो आपको उस तरह से ड्रेस करना है. बर्थडे पार्टी में शादी के कपड़े नहीं पहन सकते. आप शादी में बहुत ही लाइट कपड़े नहीं पहन सकते, राइट? शादी में इट इज रिक्वायर्ड कि आप थोड़े से गॉडी कपड़े पहने, राइट? सिमिलरली अगर आप फॉर्मल मीट में हो, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग अटायर है, वो पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए. वो कहीं से भी कैजुअल नहीं लगना चाहिए. सो if you are focusing on that, then also you are liked by many people. तो लोगों को लगता है, oh God, see this person dresses himself or herself as per the occasion. कि जैसा occasion है उसके according that person dresses himself or herself. And इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करें. नहीं, आप अपने पास कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल अटायर. तो आपके पास कुछ पेस्टल शेड्स होने चाहिए शर्ट्स के, ठीक है? और दो कलर्स होने चाहिए ट्राउजर के. वन इज ब्लैक, अनदर इज ग्रे. आपके पास पेस्टल शेड्स के शर्ट है और ब्लैक और ग्रे ट्राउजर है, तो इसके साथ आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑफन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज आवर फुटवेयर. यू नीड टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर फुटवेयर कि आपकी फुटवेयर कैसी हैं. बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बात तो करते हैं, लेकिन व्हेन द पर्सन मीट्स अस, उसकी सबसे पहली नज़र हमारे फुटवेयर पे जाती है. सो इसका भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारे फुटवेयर पॉलिश होने चाहिए, हमारे फुटवेयर कहीं से फटे नहीं होने चाहिए, हमारे फुटवेयर्स में आवाज़ें ना आती हों. ठीक है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल. एंड वंस यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, nobody can stop you to present yourself properly. All right. अब हमारी तीसरी चीज है, बी ओपन एंड कॉन्फिडेंट. कहा जाता है अ पर्सन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट इज इनकम्प्लीट. स्माइल इज समथिंग विच मेक्स यू कंप्लीट, विच मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप किसी से मिले, आप
कॉन्फिडेंट हो, आपके चेहरे पर एक स्माइल हो। ठीक है, स्माइल क्या काम करती है, आई टेल यू। स्माइल एक्ट्स एज द शॉर्टेस्ट ब्रिज बिटवीन टू पीपल। जब आप किसी से बात करते हैं एंड आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है, सो द अदर पर्सन ऑल्सो बिकम्स वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू यू। मे बी दैट पर्सन बिकम्स मोर इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि उसको लग रहा है कि सामने वाला मुझे अच्छे से बात कर रहा है, स्माइल देके बात कर रहा है। सो उसको लगता है नाउ द कॉन्वर्सेशन कुड बी स्मूथ, नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। देयरफॉर जब आप एक स्माइल देके बात करते हो, यू आर नॉट डूइंग अ फेवर जस्ट ऑन योर सेल्फ, यू आर डूइंग अ फेवर ऑन द अदर पर्सन एज वेल, बिकॉज यू आर मेकिंग दैट पर्सन फील कंफर्टेबल। एक बात हमेशा याद रखना, पीपल कैन फॉरगेट योर वर्ड्स, but people will never ever forget how you made them feel. So in case you want to be liked by others, in case you want that you should be attractive, then never ever forget to smile. Smile मतलब एक हल्की सी मुस्कान, you do not have to grin like this, okay? Many people grin और वो अलग से artificial नजर आता है, so you just have to maintain a simple smile on your face so that the other person feels easy to talk to you. This is very much important. You have to look interested. And how do you look interested? कई बारी क्या होता है ना, हम बहुत चीजें बोलते नहीं हैं, पर वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है, राइट? वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द पर्सन और वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब एक बात सोचिए, कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, विल यू एवर फील अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन और विल यू एवर फील गुड अबाउट दैट पर्सन? नो, we all want to be felt that we are important. Similarly, when you are talking to somebody, how somebody will feel that that person is important? When you will show that you are interested in that person. तो इसके लिए क्या करा जा सकता है? Very simple thing. Now, this device is very famous in today's era, right? We are super engrossed in this device. Now, when you are talking to somebody, make sure that you stop using your cell phone. आप अपने सेल फोन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है? When you are talking to that person, make sure that person gets attention that is undivided attention, जैसे कि एक छोटे बच्चे को दिया जाता है. I know you all must have seen babies की क्या आदत होती है, when they see you they want all the attention towards them. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप फोन यूज करो या you do something else. When they are there, they want that you should project all your attention to them. Same kind of undivided attention you need to give to the person to whom you are talking, in order to make that person feel that yes, you are actually interested in talking to that person. आप एक बार ये करके देखिए and I am pretty sure you will come back to me and tell me that yes, it actually worked. Because ये चीजें हैं, it actually works. When you will show that yes, you are interested, the other person will feel good and will be more interested in talking to you. Maintain your eye contact. Now this is something really really important. आपने हमेशा सुना होगा, क्लास में टीचर्स कहते हैं, ऐसे भी प्लेसमेंट ड्राइव्स वगैरह होती है या फिर आपको जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, वी ऑलवेज से दैट मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट. Now it has got a reason why we ask you to maintain the eye contact. जब आप एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, सो दो चीजें दिखाती हैं. सबसे पहले इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, आप नर्वस नहीं हो, यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? दूसरी चीज जो वो दिखाती है वो ये दिखाती है कि आप आई कॉन्टैक्ट तभी मेंटेन करते हो व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ. ठीक है? सो जब आप सच नहीं बोलते हो, इट इज ओनली दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, राइट? सो if you're maintaining eye contact, it also tells the other person that whatever this person is saying is absolutely right. There is nothing hidden. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ये इंसान छुपा रहा हो, right? So try to maintain an eye contact to grasp the attention of the person. Now, when I say maintain an eye contact, does not mean that you will keep your eyes glued to the other person. वैसे भी नहीं करना है, ठीक है? Like you can maintain an eye contact and उसके बाद थोड़ा सा आप इधर उधर देख सकते हो. Then again, look into the eyes of the other person and start talking. So this is how you show that you are confident.
you are open, and you are embracing the other person, right? Okay. Now, these are certain things which you are supposed to avoid. Number one, stop playing with your hair. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं who have, especially girls, who have a habit of playing with their hair, like they twirl their hair, or they just start patting their hair. So you need to avoid these things. Scratching your cheeks. Okay, I'm happy to meet you. Oh, well, let me tell you, that was, no, that is wrong. Biting your nails. We have seen many people who often bite their nails. So it is not a good habit. And touching your nose. Every time you talk, you just touch your nose. You're saying a word, then you. So all these things, they only reflect one thing. They tell or talk about your nervousness. So avoid doing these things. आप avoid करो ये सारी चीजें करने से, ठीक है? बिकॉज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस शो कर रही है, ठीक है? आई नो मेनी पीपल सबकॉन्शियसली हैव अ हैबिट ऑफ टचिंग देयर नोज, स्क्रैचिंग देयर चीक्स, प्लेइंग विद द हेयर. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम से आप इसे एकदम बंद कर दोगे. ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. But if you start working on these things, I'm sure that slowly and gradually you are going to overcome these things which happen subconsciously. ठीक है? Because these are actually a negative body language. It's not about talking to any person, but आगे भी when you go for any interview or maybe you go for any meeting, such things are going to showcase a negative side of your personality. So let's know what these are the negative sides, and when we know that these are negative sides, then we should start working on this. We should start overcoming these things. All right. Number 4, be courteous and attentive. Now, this is something that we often feel. हम बाकी चीज़ों पर तो काम कर लेते हैं, ठीक है? वी वर्क ऑन आवर ड्रेसिंग सेंस, वी कैन वर्क ऑन आवर हेयर स्टाइल, वी वर्क ऑन आवर फुटवेयर, we work on our language, but what about our behavior? Behavior does matters, right? Everyone wants to be with somebody who is courteous, who is attentive. All right, now when I say courteous, it actually does not require any skill that you have to learn. You just have to be polite. All it needs is politeness. How humble you are, how kind you are. So, as a human being, we all should be kind and polite, right? This is something, if you take into your personality, you would be liked by everybody. All right, this is something which is not dependent on your status. This is something which is not dependent on your money. This is something which is not dependent on your knowledge. All you have to be is just kind, polite, and humble, right? So this is something which does not require any effort. You have to just be what you are, right? And I believe when a child is born, the child is kind, polite, and humble. It is just that with the influence of society, the person becomes witty, the person becomes clever, the person becomes self-centered. So you have to think that you are like a newborn person who is not aware of any other thing that is happening in the planet. You were born humble and polite. You have to be that way. Okay. All right. Now, when you meet somebody, all right, nobody wants to talk to a person who is a gossip monger, right? So you do not even have to project that you are a gossip monger. Rather, when you meet somebody new, you can start talking about current affairs, right? Like what's happening in India, what's happening abroad. Now, when I'm saying current affairs, you do not have to again talk about what the government is not doing. Stop complaining. Nobody likes a person who is complaining every now and then, complaining about the environment, the government, the society. No. Talk something positive. Talk about what's going on, what's there new, like what kind of technology is there. Like if you are going for any business meet, like if this technology is there, how it can help people, or what's going around, how good our country is doing. So talk about current affairs. This is where you actually tell the other person that yes, you are knowledgeable enough, and at the same time you are far away from the gossips. Trust me,
Nobody likes gossip monger. If you are gossiping about somebody right now, the other person knows that when that person is going to leave, you are definitely going to gossip about that person. So rather invest your time into something constructive. Number three, someone's interest. Oftentimes I have seen people कि वो अपने बारे में बात करते रहते हैं. I like this, I like that. That is wrong. When you are talking to somebody, you should try to talk about what the other person likes. Now, of course, आप कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं है, right? You need to ask what are your areas of interest, or what is the thing that that is you enjoy, or what are the things that you like to do in your downtime. So, if the person says, "Well, I'm very fond of reading books," then you can definitely ask a question. Oh, great! That even that even I enjoy. So, what kind of book you like? ठीक है तो सामने वाला कुछ बताएगा, then you tell that okay, you have read these many books or something like that, and from there you build on the conversation and try to know that what is the thing that the other person likes, or what are the things the other person is interested in, so that you can build a conversation on the same thing. Next, avoid self appreciation. Apne muh mya mithu. Now, knowingly or unknowingly, at times we do this and we do not realize. Remember one thing, no matter how good you are, but if you are self appreciating yourself, then you are somewhere degrading yourself, right? आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो. Let others appreciate. That matters a lot. जब दूसरे आपको appreciate कर रहे हैं, which means that there is something good in you that people are talking about. So rather self appreciating yourself, you can appreciate other people as well, like what good others have done. This also shows that yes, you are somebody who is very optimist, who sees good in people. ठीक है, इट्स ऐसा नहीं है दैट यू आर ओनली कंसर्न टू योरसेल्फ कि आपको सिर्फ अपनी चीजें अच्छी नजर आती हैं. सो मेनी टाइम्स दिस thing acts as a negative for your personality when you start appreciating yourself. So forget these things. When you are meeting somebody for the first time or for the second time or whatever it is, make sure that you do such a thing that the others start appreciating you, rather you talking or you boasting about your achievements. All right, now the last tip that I have got for you is close on a good note. Now what does this mean? Yes, close on a good note means now that it's time to say goodbye. But do you think that we need to say just goodbye? Do you think that is this much sufficient? It's not. So when you are saying a goodbye, or when you are bidding a goodbye to somebody, what are the things that you need to do? Always say something which the other person is going to remember. Simply do not say bye. You can say bye. It was nice meeting to you. So that samne wale ko lage that yes, the other person was really happy to meet me, and the person feels good. Or you can say it was nice talking to you. It was pleasure talking to you. It was nice knowing you. ठीक है, आप ये स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं सो दैट द अदर पर्सन एक्चुअली फील्स that yes, he is an important person, or he or she is someone who has spent a quality time with you. उसे भी लगे कि if that person was talking to you 10 minutes, that was something productive and you have really enjoyed meeting that person. So you should make feel that person, and how you can make feel somebody by saying some good words. Also, if it was a business meet, you can exchange your business cards. All right, you can give your business card, and if the other person is interested, that person can also give his business card to you. So that is considered as ending or stopping, or ending the conversation at a good note. At times, if you wish, you can also exchange, like if it is a casual meet, you can often exchange your phone numbers, or you can even exchange your email addresses. So these are the things which actually make the other person feel that yes, I have met someone who was actually interested in talking to me, and it was a wonderful conversation. That is the reason the person said that it was nice meeting to you. So these were 5 tips that I have given to you, and if you make use of these 5 little things, you can make a huge difference in your personality, and you will say that it will not be too far when people will
actually start liking you, people will actually start appreciating you, and you will ultimately become a charismatic, a magnetic personality. With this, I say thank you to everybody, and I'll meet you soon with a new lesson. Till then, take care, bye bye, and do not forget these 5 tips to impress somebody. Take care.